Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our special program Thames Speaks on MATV Sky 711. Every week we discuss different ideas, we discuss with different people, and especially those people who has experienced a lot in their lives and they have donated back to the society and the community. As I said earlier in the previous session, writing memoirs, writing their own experience, sharing their own ideas, it's not just a new thing. I think we are just doing this from the beginning of the civilization. We have written in Harappa, we have written in Mohenjo-daro, we have written in France, we have written in Egypt, we have written thousands of years back. Still we are trying to find out the meaning of those things which people has written, especially the people those who were in power, especially the people those who were ruling in that era. Still, so I can say writing is not a new thing, especially in those fields where people are in governance and those who are in politics. So in this modern field, we can find that recently in 21st century, one of the politician who is an upcoming politician also in many ways, and who has established himself, he started his journey from Ajmer. He did his masters, he did his law from Ajmer. Finally, he became member of parliament, and I can say he was in charge of Bihar, he was in charge of UP, he was in charge of Gujarat, Rajasthan, and he basically has seen the rise of BJP. There was a time when BJP was called Baniya and Brahmin Party, when BJP was based on in cities, but nowadays the man has seen the BJP has gone to the rural area, the BJP has gone to the masses. So I would like to introduce one of our first guests, Mr. Bhupendra Yadav, Minister. He is Minister in Modi government in India. Welcome, Mr. Bhupendra Yadav. Thank you. And this is also an amazing, I can say, amalgamation, because normally whenever we discuss about BJP, the first thing which comes to our mind that there's a lot of clash between BJP's ideology and the ideology which comes from JNU. But I think, as I said earlier, Bhupendra Yadav is a man who always worked in strategies, and he was, I can say, the star of strategies in different political parties and different political elections. So I think he has basically created one more alliance, and he has basically co-authored this book with Miss Ila Patnaik. Ila Patnaik is a principal economic advisor. As I said earlier, I think in every household, ladies are not just economic advisors. I think they are decision makers. But when we see at the top, I think in the top 10, I think she is one of the most revered figure who deals with economics. So her co-author is Ila Patnaik, and fortunately she did her PhD in economics from Surrey University. So I would like to welcome our second guest, Ila Patnaik. So welcome both of you in Thames Speaks program. I know there are a lot of questions, especially when we think about world politics, and especially because India is also one special powerhouse in world geopolitics now. So it's definitely a case for many people in Europe and many countries that how come a political party who was slowly and gradually expanding and suddenly it became a party with masses. So I think this was an amazing step that you have written this particular book, especially when you are in power. You are just working under the leadership of Modi ji, and you are also working in parliament, and you are associating with other people, and you are writing this. How was your experience, Bhupendra ji, when you started writing about this book? Actually, after 2019 election, when I met with Ilaji, and Ilaji suggested me to write to make something on the 2019 election. Then started my 2019 election. Ilaji also suggested because know the success of BJP from when BJP start, what was the reason of the BJP, how was the journey of the BJP, what was the resolution passed by parties from its start. And there is one time in the BJP history that BJP is the successor of Janasangh. Janasangh party was the predecessor of BJP, and in 1974, Indira Singh took the emergency in the country and our democracy was in the suspension. That time all political parties merged, and that time Janasangh was merged into the Janata Party. But later on, the Janata Party was divided on the issue of ideology, because some partymen of the Janata Party asked to the BJP member that they can't continue with their RS.
when the Janata group partition was happened in the Janata Party and new BJP was formed in 1980. It's a matter of fact that after formation of BJP in 1984, BJP only got the 2 seats because there was a sympathy wave of the unfortunate incident of Indraji, and BJP got only 2 seats from 1984 to 1991. It was a miracle journey in the BJP. That from two to become the main of the party. In 1996, BJP became a second party, and the government was formed under the leadership of Prime Minister Shri Bihari Vajpayee. Then 2004 again BJP lost by election, and 2004 to 2014 is the struggle time. In 2019, in the leadership of Honorable Prime Minister, BJP again succeeded to make the party, and in 2019 BJP again get power. So BJP is the first party apart from the Congress to get the full majority continues the truth. So that's the history people want to know. Who are the secretaries of the BJP? Who are the main founders of the BJP? What was the strategy? What was the planning? What was the program? What was the futuristic idea? And what BJP make role in the governance also. So the basically economic part, I am very fortunate that Ilaji is ready to write with me, because she is a good economist and she very good analyzed all things, matter of policy and governance. So we both finalized that we will write. I was writing the political part and Ilaji contributed in the economy part. But we did, every part, either it's economy and it's politics, we discuss each other, and I am enlightened by the contribution of Ilaji, and the book is coming in your hand, and now you are discussing this. Just I want to add one more thing. I think from this conversation I can gather one more thing. I know this is an amalgamation or a partnership between politics and economics. This is also an amalgamation and partnership between right-wing political party and the powerhouse of, I can say, the left-wing philosophy. And I can see one more thing. So Ilaji, when you started writing, how did you feel that the connection with political party BJP and its economic policies, how it will go, and what did you thought in the beginning? Can you hear Vilaji? I think she has lost the connection. I know we are moving from 1G to 5G, but still at some point we need 6G. In the meantime, my next question is from Bhupender ji. I know Bhupender ji, you have seen the journey. From beginning you have been active in student politics, then you were highly busy in war room strategies, and finally then you joined the Rajya Sabha, and you are working in various portfolios in now PM Modi's cabinet. When you see this whole thing in last 20-30 years, I can see, once upon a time 30 years ago BJP was having an image that it's just a urban party, and especially it is just party of Brahmins and Baniyas and few other castes only. I can see after that social engineering word became very popular, and I can also see that BJP went from urban to rural area and has reached each and every village, and I can see the special word which I think no one else has coined, which I can say the Panna Pramukhs. So how did you see this whole journey in last 20 years and 30 years? First thing I want to be clear, Jodha ji, that there are two types of image painted. First is the urban face party, and second, the party is a communal party. These are the strong allegations against the BJP. Even Atalji won his first election in Balrampur. Balrampur was a rural-based constituency that time in UP. And even in the Janata Party's time, second time Janata Party won the election, the Jana Sangh is having a 19 members. And more than 50% members belong to the rural community. Even in 1960s or 70s, there was we mentioned in our book also, Mr. Devdutt was the president of Gujarat Jana Sangh. He was belongs to a scheduled tribe. Suraj Bhanji was the president of Haryana. He was belongs to the scheduled caste community. So it was wrongly interpreted that BJP was only a party belongs to the urban class. Yes, BJP have an impact in the urban area,
but BJP belongs to the party, is a pan-Indian party. But getting this recognition, it will take a long time. And there was a contribution of Advani Yatra also. There was a contribution of Atalji Oratory also. There was a contribution of some policy decision taken by the BJP. There was a contribution of the dedicated worker of RSS and the full-timer worker of the BJP who dedicated their life to make this organization strong. So there are so many reasons, and it's a time when Atalji got a popularity as a popularity as a prime minister of this country, and same even 2014 and 19, definitely the popularity of our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi played a vital role to popularize the BJP in the pan India and the whole country. I agree with you. I think even I myself have seen a lot of changes in political scenario in India. I have seen also one more change which I feel maybe pre-independence there was a time when people used to run to big cities, like they used to travel maybe 100 kilometers on foot or maybe through bullock cart or maybe on horse, just to have a glimpse of a national leader. It can be Mahatma Gandhi or any national leader, or they would have gone to hear their voice on loudspeakers and they were happy in that era. And after that we have seen there were a lot of political parties, they used to organize these big huge rallies, and people used to gather like 5 lakh people or 10 lakh people, and we used to measure the strength of the person or the political party based on the mass which they can collect in the rally. We have also seen in last 20-30 years it was like a manufactured crowd, like people used to just collect different people and bring them down so that they can show on the ground that they have a lot of supporters. But I can see there's a huge change, a huge shift in last 10 years, especially in terms of mass mobilization. I can put it this way, BJP has achieved mastery in mass mobilization in India. What is the reason behind that, and what is the secret behind this phenomena? How did you try to achieve this? I'm not just talking about virtual rallies. I'm talking about how did you achieve this? First thing, Jodhaji, I want to say that India is the country of the festivals. So it's Indian pupils, they have a habit of participation in the festival. And the fortunate part of our country is that election is also one type of festival. People are not taking in politics as a yes, they are living in a politics in a lively way also. Even in the Gram Panchayat level to the parliament level, everybody participating in this politics. Even to going in the marriage function is also one of the major work of a political persons in India. So that type of mood is there. But definitely in our country, when any leader become a big leader, people followed him, people want to listen him, people want to attend his rallies, and that's the reason this time so much people come in the rally, the rally is addressed by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and it's a hard work of party also, and it's a oriented skill of our Prime Minister. And the main reason for the success of BJP from 2014 from to 2019 is a delivery. This is the era where in India and the leadership of our Prime Minister, we are delivered so many things to the poor people which they needed. Either it's a gas connection, or it's a electricity, or it's a Ayushman Yojana health card, or it's a education facility, or it's a digital connection, or it is a road network that completely free and fair manner delivered by the BJP government. And there is a formula which is formulated by our Prime Minister, that's called a JAM, Janadhan, Aadhaar and Mobile. That means every person is having their own Janadhan account that give access to the bank. Second is the Aadhaar, which is a unique number of the pupil identity and citizenship number. Third is the mobile app. So these connection giving this technology transfer is basically able to deliver a goods to a pupil at their doorstep. Then that's the popular scheme and transparent scheme of the government of the last era of the Narendra Modi government is able to get gain majority in 2009. Thank you. I think Ilaji just left earlier. I think maybe she was not happy when I was just introducing both of you, and then she was thinking my question was very simple. No, I understand. It's just a joke. It's just a joke.
My question was very simple. Politician from the BJP wing and an economist who did her economic degree from DU, JNU, finally Surrey University in London. How did this combination work? And that was my question to you before you dropped. So politics determines economic policies of a government. So for example, if the party believes that you have to reach out to people, give them better standards of living, then it is politics that decides that this is what when we are in power, this is what we are going to fight for. Or when you decide that, oh, we want growth, and how do we want growth? So really, you can't separate politics and economics. Who you reach out to, how you reach out to them. These are not questions that we can see away from politics. So what I was trying to understand, and being, I think, from JNU, and so I studied both at the University of Leicester for 3 years, and then later I moved to the University of Surrey in Guildford, where I finished my PhD. And all that teaches you that to understand something, you have to study it, go as close to it as possible, and that's what I was trying to do, and that's how we have this book. Good. I think before program I was discussing with Elaji, and then I realized this book is outcome of the pandemic. The pandemic gave an opportunity to sit, to relax and think, and I think it was a great opportunity. And I said, probably if you have shared this idea now, and this idea will be widespread, maybe people are expecting, maybe there may be a next pandemic after a few years, and people will start writing books. Hopefully we will find thousands of politicians will write books in the next pandemic. You have opened a new option for them. My next question is from both of you, but I will start with Elaji because this question is from economic front. The BJP government has taken a lot of decisions, especially those decisions which we were not which we were not thinking that it will take any democratic government, especially in India, because there was lack of strong will. But BJP government has taken a lot of decisions which has surprised many political circles and many countries as well. One of the decisions was demonetization. What do you think? Was this decision right or wrong? Was this successful? If it was successful, what is that achieved, Elaji? See, the intent of the decision was to get rid of black money, was to get a digital payment system up and running so that people's transactions get recorded, and that whoever is trying to either people who are corrupt or people who have not paid their taxes and stashed away cash and who are dealing in the cash economy and have collected loads of cash, that they should be forced to pull out their cash or to lose its value. Now, the very interesting thing that happened for India is that even though, there was no COVID-19 when in November 2016 demonetization was done, but when COVID came, then India had all the digital infrastructure. So there's a UPI system, BHIM apps, many private digital payment systems as well, who are very, very widespread, and people were able to use these systems, and they were able to actually to a very large extent continue to do transactions which would not have been possible had this system not been there. So on the digital application, on the digital payment system, what was done during that time is what laid the foundations of why we were able to recover during the COVID period. Thank you. My next question is from Mr. Yadav. We all agree, before independence, everyone, those who were in national scenario, they joined, maybe more or less they joined the biggest party, and that was named as a Congress. After 10-15 years, it started losing its credentials, it started losing its credibility in the nation. How do you see now, in last 30 years or 40 years, how this grand old party is crumbling down slowly and gradually? And what do you see in the future? Do you think it has helped BJP? Do you think in future, if Congress will diminish, it will help BJP?
The reason for diminishing of the Congress is the corruption, number one, policy paralysis, number two, dynastic politics, number three, and not fulfill the aspiration of the regional uh, uh, regional expectation. These are the reason Congress is diminished in the even after the independence under the leadership of Honorable Mahatma Gandhi ji, he was a brilliant leader in the century. He was suggested let the works of the Congress is was finished and now we get a democracy and let the new parties come with the new thoughts. Unfortunately, that credibility goes to the Congress and Congress from Democratic Party to convert into a dynastic party. And that the dynastic rule of Congress also some extent damage to our democracy also. So people are rejecting the Congress for this reason and the BJP started its journey for a nationalistic perspective. The BJP from 1950 onwards till today continue its national perspective, but apart from its nationalistic approach, BJP also feels that delivery of the goods is also a responsibility of political party. So BJP focus itself on the governance aspect. So then BJP will be continue to more emphasize on its delivery on the governance aspect. I think that will make a BJP more strong. Thank you, Mr. Yadav. There's one more question about Ilaji. Question is, I know there was a liberalization in 1990s when I remember I was just in school and there were a lot of, I was able to see a lot of slogans on the wall as well in that era. Liberalization happened. Whom will you give credit? Do you think that liberalization has helped middle class to move up and aspiration of middle class also increased a lot after that era? And do you think it has also helped BJP to basically create a larger base because BJP was ready to BJP was ready to assist the aspiration of the middle class? Well, liberalization was certainly a good step, and it basically meant that all the policies that the previous government, the Congress, when it was in power and trying to follow the Soviet model of restricting people to set up industries or to trade or imports, that those restrictions were removed, and those restrictions, the removal of those restrictions paved the way for the progress that we saw, for the high growth that we saw. Narasimha Rao was the Prime Minister at that time, and his government did the liberalization. He was the political force behind it, and BJP, as the rest of India, as we have given credit to in the book also, benefited from the liberalization. But beyond that, a lot needed to be done. So, just removing barriers to trade and industry is inadequate. A lot needed to be done. And when, for one of the chapters, when we discuss what was done by the Vajpayee government, which came in and then opened up the telecom sector, for example, built roads. So, it doesn't just stop at allowing people to set up industries. One has to provide the infrastructure, and that infrastructure provision, which is the role of the government at large, that whether it is roads, which were very critical. So all of that. I will add one sentence here. I think that was Vajpayee era when I think first time when road traveled to the village. Normally villages travel to the cities or they travel to the roads. I think it was Vajpayee's era when road first time it traveled to the village. And still I remember Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, PMGSY, the board was in each and every village. It has changed in India's scenario. But whom will you, I know in the first liberalization, and I also know in 2014 that's like a liberalization for the second part. Whom will you give credit for the first liberalization? The Narasimha Rao government. I agree. And why do you think that Narasimha Rao should be credited for that particular process, not Manmohan Singh ji? I mean, we all credit the political leadership. Even today, when we credit
Pradhan Mantri Modi ji. We give credit to the political leadership. The Prime Minister is critical in deciding such big reforms. When it comes to the small working of a ministry and some, nitty gritty, then of course the minister is very important. But when it is a reform that changes the history of the country, no such reform happens without the Prime Minister and the political leadership pushing it, backing it, batting for it. So, when for the policies when Manmohan Singh was Prime Minister, he gets the credit. Or when Modi ji is the Prime Minister, he gets the credit. That's great. I think I completely agree. Maybe recently this present government of India, maybe Bhupender ji will write something, definitely credit after. For thousands of cracking Valentine's Day cards added to daily that are really, 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 really thoughtful. Buy online today at thoughtful.com. It doesn't matter where you start, just that you do. Come on, keep up with me. I'm automatically taking care of your speed and incline. All right, our last sprint. This is the time it matters the most. That was absolutely amazing. You were a different person than when you started. Nordic Track, our home for interactive fitness training. It's double the size now. Yeah, it's sore to the touch. Smells a bit. No, not quite like weeping, but sticky. Definitely sticky. Your whenever, wherever health service. Speak to a GP 24/7. Search Simply Health. Even as a young lad, our John was always more at home on the sea. A proper no fuss and bother kind of guy. When he passed, direct cremation was the perfect way to give him the send-off he would have wanted. At Co-op Funeral Care, we know everyone is different. So if you want a simple alternative to a funeral, our direct cremation is available from just $9.95, and we can help you celebrate your loved one in your own way. To find out more, visit us or give us a call. Need new specs for work in the morning? Frames, lenses and delivery before 9 from just $45.95 with Select Specs Express. Spec-a-doodle-doo. For your free brochure, call 0800 999 7999. Rise, recline, relax with Oak Tree Mobility. It's for her. It's for him. Let's go. It's for them. If you aren't around. Life insurance from Legal & General starts from just £6 a month and could help support your loved ones financially if the worst happens to you. You'll also receive a £100 gift card after you take out cover. Life insurance. It's for them. Get your quote today. Whether it's a weekend adventure or a midweek commute, at Co-op Insurance, we've got your car covered. We'll help protect your no-claims discount and refund the cost of your excess if you have an accident caused by an uninsured driver. Plus, 10% of new customers paid £151 or less for their car insurance. Switch to us today by searching Co-op Car Insurance or calling 0800 115 115. Co-op, it's what we do. This is an urgent appeal. Please stop and look. This is Yemen right now. Years of conflict have left the health system on the brink of collapse. Children in Yemen right now face unimaginable horrors, war, hunger and disease. Yemen may seem far away, but there is something that you can do to help. Search UNICEF Yemen online or text Yemen to 83080 to find out how you can help. Just £5 could help provide life-saving food for one child for 1 week. I've seen UNICEF's work firsthand, and I know the difference your donation makes in responding to the emergencies around the world.
No child should ever die because they don't have enough of the right food to eat. We cannot stand by and do nothing. So please search UNICEF Yemen online or text Yemen to 83080 and help save a child's life today. देवी और सज्जनों, थेम स्पीक्स के आज के इस कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे उन विषयों पर जिस पे आज के समसामयिक राजनीति में बहुत कम लोग बात करते हैं। वो बात इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें डर है कि वर्तमान में जो कुछ उन्होंने पाया है उसे खोने का उन्हें डर है। जो सत्ता, जो जिस सेवा के शीर्ष पर वो पहुंचे हैं उसके बारे में लोग बात करने से हिचकिचाते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने जीवन की जो यादगार क्षण हैं, जो मेमोरीज है या जो उनकी ऑब्जर्वेशन है, वो अपने जीवन काल में, रिटायरमेंट के बाद नहीं, रिटायरमेंट से पहले पब्लिश करवा लेना चाहते हैं। तो मैं इसे कह सकता हूं कि इंग्लिश में एक टर्म है योलो, जिसे कहते हैं यू ओनली लिव वंस, मतलब आप जिंदगी एक बार ही अपनी जिंदगी जीते हैं। तो कई लोग सोचते हैं कि जो हम आज की जिंदगी जी रहे हैं उसे पूर्णता से जिएं, जिससे कल हम जो नया करेंगे तो उसके बारे में कुछ नया लिखेंगे। जब पहले ये अधिवक्ता थे, मीन्स लॉयर थे, तो फुल प्रैक्टिस में थे, तो उन्होंने लॉ के बारे में बुक लिखी। जब वो पॉलिटिक्स में आए तो उन्होंने फुल कह सकते हैं कि अपनी पॉलिटिक्स के बारे में बुक लिखी। मुझे लगता है कि हो सकता है कि जल्दी वो गवर्नेंस में है तो गवर्नेंस पे एक नई बुक लिखेंगे। ये शायद मुझे एक पैटर्न लगता है। मेरा पहला जो सवाल है वापस ब्रेक के बाद भूपेंद्र जी से कि कांग्रेस के शासन में, जिसे हम कह सकते हैं कि वेलफेयर सिस्टम डेवलप किया, जो कह सकते हैं कि सोशल इकोनॉमिक मॉडल था जो यूएसएसआर के उन सिद्धांतों पे चलता था, उन सारे सिद्धांतों के बाद मोदी जी ने एक बार, मुझे याद है कि संसद में उन्होंने कहा था कि जो मनरेगा है वो उनकी खामियों का, उनकी कमियों का एक जीता जागता नमूना है, मतलब उनके मोमेंट ऑफ फेलियर है जिस मनरेगा को उन्होंने कहा। उन्होंने उसमें उस वेलफेयर सिस्टम को बीजेपी ने कैसे चेंज किया कि टॉप से लेकर बॉटम तक एक ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी रहे, जिसके बारे में आपने किताबें भी लिखा है। और मैं इस पे वो भी कोट करना चाहूंगा जब राजीव जी ने फेमसली एक बार कहा था कि मैं जब 100 पैसे भेजता हूं तो या 1 रुपया भेजता हूं तो लोगों तक 10 पैसा पहुंचता है। उस सारे सिस्टम को उन्होंने कैसे बुलडोज किया? देखिए, सबसे पहली बात है कि कोई भी सरकार चलाने के लिए आपको इस ट्रस्ट के साथ सरकार चलानी पड़ती है कि सरकार हमारे लिए नहीं है, सरकार जनता के लिए है। और इसमें किसी प्रकार की बेचारेपन का सवाल नहीं होता। मैंने जो मेरे पहले जो भी कहा था कि मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, आज भारत में 10 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि पहुंचती है, तो किसी को कहीं चक्कर नहीं लगाना पड़ता, सीधा उनके खाते में पहुंचती है। आज 12 करोड़ लोगों को, महिलाओं को उज्ज्वला गैस की सब्सिडी पहुंचती है तो सीधे उनके अकाउंट में पहुंचती है। आज मनरेगा का पैसा पहुंचता है तो सीधे उनके अकाउंट में पहुंचता है। तो जो विषय आप कह रहे थे कि अगर हम 100 रुपया भेजते हैं तो 85 रुपया रास्ते में रुक जाता है, आज 100 रुपया निकलता है तो 100 रुपया सीधे अकाउंट में पहुंचता है। तो टेक्नोलॉजी के उपयोग करने से हम कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नेंस में कर सकते हैं, और जो सरकार की योजना है उसको एक गरीब आदमी तक सीधे पहुंचा के कैसे लाभान्वित कर सकते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है, जिसका लाभ देश के लोगों के गरीबी के से जीवन के उत्थान में काफी हुआ। इन सारे लाभों के बाद ऐसा भी हुआ कि जो, मतलब ऐसा आरोप लगाने वाले लगा भी सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो अपना एक नया सिस्टम बिल्ड किया है कि गांव में बैठे होने वाला आदमी जिसके खाते में डायरेक्ट पैसा आता है, उसे ये महसूस होता है कि यह पैसा प्रधानमंत्री मोदी ने उनके खाते में जमा करवाया। वो एक फीलिंग देना, वो एक एहसास देना भी शायद एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने वर्किंग कल्चर का एक हिस्सा रहा है। मेरा जो नेक्स्ट सवाल ये है कि इलाजी से, इलाजी जो एनडीए की और जो यूपीए की जो दोनों की पॉलिसीज़ रही हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की या इकोनॉमिक की जो पॉलिसीज़ हैं, उनमें मेजर क्या डिफरेंसेस हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण नई जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनकी कुछ पॉलिसीज़ हैं वो उनसे हमें लगता है कि हमारी जो नेक्स्ट स्टेज है इकोनॉमी की, इट विल बी रियली स्ट्रांग, और जो हम एक सपना देखते हैं एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का, वो कैसे पूरा होगा? तो सबसे बड़ा एक जो फर्क आया है वो ये है कि इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, एक फेडरल स्ट्रक्चर है, स्टेट्स हैं जिसमें उनके साथ पावर एंड पैसा बांटा गया है। इस तरह से सबसे इम्पोर्टेंट जो रिफॉर्म है वो है जीएसटी का रिफॉर्म, जिसमें कि जो सर्विस सेक्टर जो कि सेंटर टैक्स करता था उसको शेयर किया गया स्टेट्स के साथ।
जिस सेकंड एक्सपेंडिचर जिस तरह से किया जाता था सेंट्रली प्लान स्कीम्स से, और फाइनेंस कमीशन ने जब रेकमेंड किया कि स्टेट्स को का बड़ा अनटाइड पार्ट बढ़ाया जाए, तो वो बढ़ाया गया। तो फंडामेंटली आज जब बजट पेश होता है, तो in contrast to the previous period, in contrast to the UPA period when it used to be that there was a lot of lobbying that would happen कि आप इस चीज में एक्साइज बढ़ा दो, उस चीज में एक्साइज घटा दो, इस चीज का रेट कम हो, इस चीज का रेट, सब हटकर पावर गई है जीएसटी काउंसिल के पास। तो अगर आप देखें कि एक देश, इतना बड़ा देश है हमारा, उसमें इस तरह से स्टेप्स ऐसे लिए जाएं जहां पे कि स्टेट्स के हाथ में ज्यादा पावर हो, जिस तरह से जो एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया था जिसमें कि चीफ मिनिस्टर्स को जाना पड़ता था प्लानिंग कमीशन के सामने ऑलमोस्ट एज इफ वो भीख मांगने जा रहे हैं, किसी और का पैसा लेने जा रहे हैं, उसके बदले आज उनकी हक से उनको जब पैसा मिलता है, या सीधा जीएसटी जिस तरह शेयर होता है 9 मतलब आप भरते हैं 9% स्टेट्स के पास जाता है, 9 सेंटर के पास जाता है, तो जिस तरह से पैसा जाता है स्टेट्स के पास और जिस तरह से वो पावर रिलेशनशिप चेंज हुआ है, that is going to lay the foundations of very high growth for India. जो हम सपना देखते हैं बहुत बड़ी इकोनॉमी का, क्योंकि आज की दुनिया का सच ये है कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, चाहे वो आदमी हो, चाहे नेशन हो, वह या ऑर्गेनाइजेशन हो, वही एक स्ट्रांग कंट्री है इस पूरी जियोपॉलिटिक्स के अंदर। ये आपको क्या लगता है कि ये इकोनॉमी का जो सपना प्रेजेंट कैबिनेट ने, प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो देखा है, आपको लगता है कि वो कब तक अचीव होगा? उनकी क्या पॉसिबिलिटीज लगती है आपको? देखिए, जो सपना है कि इंडिया को एक आत्मनिर्भर भारत हो, जो लोग दुनिया की वर्ल्ड इकोनॉमी को कॉन्फिडेंस के साथ फेस करे, उसमें पार्टिसिपेट भी करें, पर अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपने मेक इन इंडिया के साथ, जिसमें कि यहाँ इन्वेस्टमेंट हो, यहाँ के लोग पार्टिसिपेट करें और उस स्ट्रेंथ के साथ सामने दुनिया के पूरे ग्लोब में पार्टिसिपेट करके और बढ़े। वो सपना आप देखिए, एक के बाद एक पॉलिसीज आती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अनफॉर्चुनेटली वर्ल्ड में पैंडेमिक आया, जिसकी वजह से हम सारी दुनिया को ही वो सेटबैक मिला। तो इस तरह से जो डेट कोई सेट करना इस वक्त पॉसिबल नहीं है। वो सपना सच जरूर होगा, आगे देखिए, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे कंसेंसस बिल्डिंग ऑन पॉलिसीज which was seen to be very difficult, वो कंसेंसस बिल्डिंग बढ़ रही है। तो और उस पाथ पे चली है गवर्नमेंट। इस बजट में जिस तरह से बहुत बड़ा एम्फेसिस दिया गया पब्लिक सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बहुत इन्वेस्टमेंट की गई, 35% इंक्रीज हुआ है ऑन पब्लिक सेक्टर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रोड्स, रेलवेज, रोपवेज, पोर्ट्स, सब पर एडिशनल सरकार स्पेंड करेगी एक्स्ट्रा। तो ये सब चीजें ही फाउंडेशंस ले करती हैं फॉर अस टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्लेयर। थैंक यू। मैं मानता हूं कि इंडिया ग्लोबल प्लेयर के रोल में शायद एक बहुत महत्वपूर्ण जगह धीरे धीरे पिछले काफ़ी सालों से बना ली है। डेफिनेटली इसके अंदर इंडिया के एज ए नेशन हम बड़े स्ट्रांगली खड़े हैं, बट एज एन इंडियन जो इंडिविजुअल लोग हैं, शायद उनकी जो डिटर्मिनेशन है या परसिवियरेंस है, उसने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। मेरा नेक्स्ट सवाल है, जो जिस बुक के बारे में बात कर रहे हैं, द राइज ऑफ बीजेपी, इस बुक के बारे में यदि बात करूं और मैं एक शब्द के बारे में बात ना करूं तो मुझे लगता है कि ये चर्चा हमेशा अधूरी रहेगी, और वो शब्द है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद पिछले कई शताब्दियों से, हजारों सालों से एक बहुत बड़ा एक ऐसा वर्ड रहा है जिसने बड़ी बड़ी कौमों को एक सेकंड में, एक रात में, एक दिन के अंदर इकट्ठा कर दिया। और यदि हम देखें, हमारी इंडिया की हिस्ट्री देखें, तो यदि कांग्रेस में जब शुरू में इंडिपेंडेंस के बाद में लोग इकट्ठा हुए, तो या उसके पहले भी उसके साथ हुए थे, तो भी वो राष्ट्रवाद के नाम पे थे, वो राष्ट्र के नाम पर थे। यदि हम पिछले 20 सालों की यदि पॉलिटिक्स देखें, दुनिया की जियो पॉलिटिक्स, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे यूरोप के बाकी कंट्रीज हो, हमने देखा है कि राष्ट्रवाद के ऊपर शायद वहाँ के कंट्रीज बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ खड़े हैं। यदि हम ब्रेक्सिट की बात करें तो वो भी एक राष्ट्रवाद का नमूना है, क्योंकि ये अपनी राष्ट्र अपनी अस्मिता को अक्षुण्ण रखना चाहता है, वो अपने आप को इतना डाइल्यूट नहीं करना चाहता।
आपको लगता है बीजेपी के साथ ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है या ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं होता या ऐसा कोई शायद कोई ऐसी योजना नहीं होती जहां पर वो राष्ट्रवाद के बारे में कुछ ना कुछ जोड़े नहीं? क्या बीजेपी का ये जो राष्ट्रवाद के साथ बहुत ज़बरदस्त प्रेम जो है, क्या वो वाकई में इसको कंटिन्यू रख पाएंगे? क्योंकि यदि हम पुराने एग्जाम्पल्स को देखें तो इंदिरा गांधी के टाइम पे हम राष्ट्रवाद के कारण हम बांग्लादेश वॉर जीते, लेकिन बाद में वो इलेक्शन हार गई है। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पोखरण विस्फोट किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाद में वो इलेक्शन हार गए। तो क्या ये राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है ये हमेशा आगे लंबी चलेगी या फिर इसके अंदर कुछ बदलाव और कुछ नए रूपांतरण आएंगे? भारत के राष्ट्रवाद को कोई एक ज्वार नहीं मान लेना चाहिए कि ये कोई उफान होता है। ये एक लाइफ को जीने का कंटिन्यू प्रोसेस होता है, क्योंकि हम एक वैल्यू सिस्टम को लेकर के चलने वाले समाज के रूप में जीते हैं। लेकिन अगर हम उसको केवल एक ज्वार मान के और एक उत्तेजना का या एक एक्साइटमेंट का विषय मानेंगे तो उससे आगे हम काम नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी COP26 में ग्लासगो में जब दुनिया का सम्मेलन हुआ था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर दुनिया को आने वाले समय में ठीक ढंग से चलना है तो हमें लाइफ को अपनाना होगा। उन्होंने लाइफ का मीनिंग किया था एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। तो राष्ट्रवाद हमारी लाइफ स्टाइल से भी जुड़ा हुआ है और लाइफ स्टाइल में भी हम कोई अंधभक्ति नहीं कर सकते। जो हमारे पास वैल्यूज है, जो हमारे पास एक लाइफ जीने का तरीका है, उसको साइंटिफिक तरीके से आज के दुनिया में कैसे लीड किया जाए, उसको साइंटिफिक रूप देते हुए लोगों के जीवन को कैसे सुखी बनाया जाए, अपने वैल्यूज को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने साइंटिफिक एटीट्यूड को और दुनिया के लिए योगदान करना। इसलिए तो भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। तो फिलोसफिकली भारत का जो राष्ट्रवाद है वो दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, सॉल्यूशन है। कई जगहों पे जो अंध राष्ट्रवाद है दुनिया में नए किस्म के झगड़े पैदा करता है। भारत की तरफ से कभी ऐसा नहीं होता है। इसलिए भारत का राष्ट्रवाद एक दुनिया को जीवन जीने का तरीका है। हाँ, हम मानते हैं कि उसकी प्रेरणा हमें हजारों साल पहले से मिलती है। उस पर गर्व करके उसके हिसाब से देश का निर्माण करना और दुनिया के लिए कंट्रीब्यूशन करना, ये बीजेपी का सबसे बड़ा। फिर भी जब मैं देखता हूँ बीजेपी के जो इतने सारे कार्यक्रम हैं, मेरे पास इस पे दो सवाल हैं। पहला सवाल जो इसका पूरक प्रश्न है वो ये है कि फिर भी राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी ने इतने सारे कार्यक्रम किए। इवन अब भी जब भी कार्यक्रम करती है तो शायद ये इनकी मेन थीम में कहीं ना कहीं एक शामिल रहता है। आपको लगता है कि इस शब्द की बहुत ज़्यादा उपयोग से लोगों की फीलिंग्स को कनेक्ट करने से बीजेपी के उभार में सहायता मिली है? अपने गौरव को जानना, अपने गौरव के प्रति अच्छा एहसास रखना, ये हमारी प्रेरणा का कारण होना चाहिए। इससे हमारे को आगे बढ़ने की प्रेरणा आनी चाहिए। इसके घमंड से हमको नहीं मिलना चाहिए। ये एक छोटी सी लक्ष्मण रेखा थी। लक्ष्मण रेखा ये है कि लक्ष्मण रेखा ये है कि हमें कहाँ पार जाना है और कहाँ पे अपने आप को रेस्ट्रेन करना है। लेकिन अपने गौरव के साथ अगर नया दुनिया बनाने के लिए हम एक अच्छा साइंटिफिक एटीट्यूड भी अपनाते हैं और जो मोदी जी हमको सिखाते हैं वो हर महीने एक मन की बात का विषय हो, 10वीं क्लास के बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा की बात हो, बेटी बचाओ जैसे आंदोलन की विषय हो, नमामि गंगे जैसा पर्यावरण का प्रोजेक्ट लेने की बात हो, ये सारे विषय ये है कि हमें अपने गौरव को जगाने के लिए अपने आसपास के लोगों के एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए गवर्नेंस भी देना चाहिए और साइंटिफिक एटीट्यूड भी अपनाना चाहिए। इसलिए बीजेपी के कार्यक्रम में जहाँ तिरंगा यात्रा भी निकलती है वहाँ ग्राम स्वराज जैसा भी कार्यक्रम होता है। बीजेपी के कार्यक्रमों में जहाँ पर देशभक्ति की बातें होती है वहाँ कोविड के कार्यकाल में पार्टी ने सेवा ही संगठन, सर्विस इज द ओनली वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा नारा देकर के लोगों की सेवा करने का भी काम करते हैं। तो ये समय परिस्थिति के अनुसार हम देश के लिए कैसा काम करते हैं वो बीजेपी का राष्ट्रवाद है। ऐसी दो घटनाएं जिन्होंने बीजेपी के इस राइज में बहुत हेल्प की, ऐसा लगता है कि वो माइलस्टोन है, वो घटनाएं? मुझे लगता है कि बीजेपी के राइज में राम जन्मभूमि की जो रथ यात्रा निकली थी उसमें कल्चरल नेशनलिज्म का बड़ा विषय था और मोदी जी के नेतृत्व में जो एक गरीब कल्याणकारी सरकार चली है उसने भी बीजेपी को जमाने में बढ़ा। तो नेशनलिज्म का विषय और गवर्नेंस की बीजेपी, ये दो ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी के लिए मायने बनाई। ऐसी कौन सी चीज है
बीजेपी की इस पूरी यात्रा में जो मैं सोचता हूँ कि शायद 93 या 94 के 90s के बाद आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से राजनीति में एक्टिव रहे हैं। तो पिछले कह सकता हूँ कि 32 सालों की इस राजनीतिक यात्रा में ऐसी कौन सी चीज़ें थी जब आपको ऐसा लगा कि बीजेपी का जो उभार है उसको और कैसे स्प्रेड किया जा सकता है, या ऐसा कभी थॉट आया कि इसकी जो इमेज है उस इमेज को ब्रेक करके कोई नई इमेज क्रिएट करना? जैसे एक मिथ है कि बीजेपी एंटी माइनॉरिटी है, या फिर एक मिथ इसके बारे में आपने बुक में लिखा है, या फिर बीजेपी के बारे में ऐसा मिथ थे कि वो सर्टेन क्लास या सेक्शंस को ही सपोर्ट करती है। ऐसा कोई थॉट आया कि नहीं, इस इमेज को कैसे ब्रेक करके मैसेज तक पहुंचा जा सकता है? बीजेपी ने जो यात्रा निकाली, उस यात्रा से एक बीजेपी का गांव गांव तक आइडियोलॉजी का प्रचार हुआ। सूडो सेकुलरिज्म को लेकर बीजेपी ने एक अच्छा मूवमेंट चलाया, और अटल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से गोल्डन कॉरिडोर से लेके अनेक काम पार्टी के द्वारा किए गए, आपने जो खुद अपने विषय में कहा कि पहले गाँव के लोग सड़क ढूंढा करते थे, सड़क गाँव तक पहुंची, तो अटल जी के पहले कार्यकाल ने भी योगदान दिया। उसके बाद बीजेपी ने अपने आप के मोर्चे और सेल बनाए, तो पार्टी ने अपने एक्सपेंशन के लिए एक बहुत बड़ा स्कोप किया। और अभी 2014 में जब अमित भाई पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, तो उन्होंने कहा था कि उस समय 282 सदस्य आना मतलब बीजेपी बहुत पीक पे पहुंच गई। तो उन्होंने कहा बीजेपी का पीक आया नहीं है, अभी बीजेपी का एक्सपेंशन और पीक आना बाकी है। इसलिए हमारे बुक में भी अगर आप देखेंगे तो 2014 से 2019 का पीरियड हमने एक्सपेंशन ऑफ पार्टी का दिया है, और उसमें डिटेल से हमने बताया कि बीजेपी ने अपने आप में विभाग डिपार्टमेंट बना के, अपने को डिजिटल सदस्यता करके, और बड़े बड़े सदस्यता अभियान, प्रशिक्षण अभियान, संपर्क अभियान चलाकर किस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड किया। और मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का अभी भी कोई पीक आया है। अभी भी पार्टी को जिसको मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भर भारत की यात्रा भी जारी है। मुझे लगता है कि वो भी उसके लिए पार्टी को और मेहनत करनी है। इला जी, मैं आपसे एक नेक्स्ट सवाल है। जब आपकी, मुझे पता है कि जब आप दोनों ने किताब लिखी होगी तो आपने हज़ारों घंटे इस पर चर्चाएं की होगी। जब बाकी लोग 24 में से 18 घंटे नींद ले रहे थे, या फिर जब बाकी लोग 24 घंटे में से 18 घंटे जूम कॉल्स कर रहे थे, तो शायद आपने उस दौर में हज़ारों घंटे इस सारी किताब पे चर्चा में व्यतीत किए। कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी की संगत में रहते हैं, या फिर जब हम लोगों से विचार जब शेयर करते हैं, मेरे पास कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी हैं, तो हम जिस फील्ड में काम कर रहे थे हमारा रुझान भी हो जाता है। कहीं ऐसा रुझान नहीं है कभी कि आज हम इकोनॉमिक्स के फील्ड में काम कर रहे हो सकता है 5 साल बाद में आपको एक नए अवतार, किसी पॉलिटिकल अवतार में देखूं? मुझे नहीं लगता कि ये कोई अवतार बदलेगा, सिर्फ कि जो चीज को, जो सब्जेक्ट को, और मेनली इकोनॉमिक्स और गवर्नेंस को समझने में इस दौरान मुझे मौका मिला, मैंने उसको बहुत अपनी तरफ से भूपेंद्र जी के गाइडेंस में, उनके मतलब उन्होंने ही सारे रेफरेंसेस पॉइंट किए, उन्होंने ही सारी कहानियां बताई, उनमें मैंने सीखा कि ये पार्टी कैसे बढ़ी और कैसे काम करती है। और जो सिर्फ एक नैरो व्यू दिया जाता है पार्टी का, वो व्यू नहीं है। और मैं तो एक स्कॉलर हूँ, मैं एक एकेडमिक हूँ, मैं, और यही एकेडमिक का काम है कि किसी भी चीज को अगर समझना हो तो उसको गहराई से समझो, उसको पढ़ो, उसके प्राइमरी मटेरियल में जाओ, उनके लोगों से बात करो। तो ये जो मैंने किया वो तो बिल्कुल प्योर एकेडमिक वर्क मैं मानती हूँ। 2014 में इलेक्शन में मोदी जी को जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित कर दिया, तो देश की सबसे प्रमुख पार्टियों में से एक पार्टी ने एक बहुत बड़े एकेडमिशियन को उनके भाषण सुनने और उसका विश्लेषण करने और उनमें खामियां और कमियां निकाल कर अपनी पार्टी को पहुंचाने का जिम्मा दिया गया। उन्होंने उनके मोदी जी के सारे भाषण सुने, उनके सारे टेप सुने, और हर भाषण का उन्होंने विश्लेषण किया, उनमें कमियां निकाली, और उन्होंने अपने पार्टी मुख्यालय दिया, जिसके बेसिस पर पार्टी मुख्यालय ने उन पर कमेंट्स किए। 2014 का इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन के बाद मोदी जी की सरकार बनी, और थोड़े समय बाद जो बहुत बड़े एकेडमिशियन और पॉलिटिशियन जिनका काम था मोदी जी के उन सारे भाषणों में कमियां निकालना, वो उन भाषणों से इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। ये एक स्टोरी है, जब कभी कभी हम एकेडमिशियन नई नई फिलॉसफीज, नई थॉट्स में आते हैं, तो कई बार हम उन सारी थॉट्स को एनालाइज करते करते हम खुद उसमें डूब जाते हैं। मेरा सवाल इसके कारण था। मैं यदि कभी ऑफ द रिकॉर्ड उन जो बहुत बड़े सज्जन हैं उनका नाम भी बता सकता हूं, और वो खुद आज देश के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है उनका भी।
मेरा जो नेक्स्ट सवाल है वो सवाल इस चीज़ से रिलेटेड है कि पिछले कुछ सालों में यदि हम देखा जाए तो बीजेपी की कहीं ना कहीं एंटी माइनॉरिटी इमेज जो मिथ बना हुआ है उस पर कई अलग अलग फॉर्म्स में अलग अलग काम हुआ है। आपने बुक पे भी उसके मैं मेंशन किया। भूपेंद्र जी, आपको क्या लगता है कि ये मिथ क्यों बना, कैसे बना, या इसको कैसे मिटाया जा सकता है? ऐसा है कि कांग्रेस ने अपने प्रारंभिक काल से, जो हमने बुक में भी लिखा है, बीजेपी को कम्युनल पार्टी पेंट करने की कोशिश करी। और 60s के दशक में बीजेपी के आइडियोलॉग दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी कहा कि हिंदुस्तान से सोशल अनटचेबिलिटी का स्टिग्मा तो जाने की तैयारी हो गई, लेकिन ये एक नई किस्म की पॉलिटिकल अनटचेबिलिटी है। और उसी के कारण हम लोगों को जनता पार्टी से भी अलग होने पड़ा। लेकिन आप ये देखेंगे कि बाद में जो लोग हमें इस विषय पे कह के गए, उन्होंने आकर के हमको वापस से ज्वाइन भी किया। और आज अगर हिंदुस्तान की पॉलिटिकल स्थिति को देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट जहाँ सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस रहते हैं, मतलब चाहे नागालैंड हो और चाहे मेघालय हो, हमारे एनडीए की सरकार है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, अरुणाचल में बौद्ध है, बीजेपी की सरकार है। और इसके साथ एक समय का सबसे बड़ा जो मुस्लिम माइनॉरिटी स्टेट जम्मू कश्मीर है, वहाँ भी बीजेपी कोलिशन के पावर में रही है। गोवा जैसी जगह में भी जहाँ क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, वहाँ बीजेपी की सरकार है। तो माइनॉरिटी का मिथ धीरे धीरे जाएगा। और दूसरी बात, हम जो गवर्नेंस के माध्यम से सबका साथ सबका विकास जो हम कर रहे हैं, तो आप भारत में एक चीज को अगर आप देखेंगे, कोई भी आदमी ये शिकायत नहीं करता है कि सरकार की कोई भी योजना उसको इस कारण से नहीं मिली कि वो माइनॉरिटी का था या अलग कम्युनिटी का था या अलग कास्ट का था। तो ये जो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन और रिसोर्सेज और जो अप्रोच है, ये बीजेपी के प्रति, माइनॉरिटी हो चाहे कोई कम्युनिटी हो, बीजेपी के प्रति एक फेयरनेस का जो भाव है वो लेकर के। थैंक यू। मेरे मन में तुरंत इला जी एक सवाल आया, और वो सवाल इसलिए आया क्योंकि हमने 2014 के बाद के रिफॉर्म्स की बात की, लेकिन एनडीए 1 गवर्नमेंट जब वाजपेयी जी के दौर में बनी, मेरे वन ऑफ द क्या कहते हैं फेवरेट स्पीकर या राइटर कह सकता हूँ, जसवंत सिंह जी उसमें एक मिनिस्टर थे, वो इकोनॉमिक्स का काम भी उन्होंने देखा एक सर्टेन सेक्शन में। ऐसा कोई यदि आप एक तो शब्द सेंटेंस में उनके कुछ कामों के बारे में यदि आपको लगता है कि वो उनका स्पेसिफिक काम बहुत जोरदार रहा, तो शायद हो सकता है कि मुझे भी उसके बारे में पढ़ने में कुछ ज़्यादा रुचि हो। तो उस वक्त में उन्होंने न्यू पेंशन स्कीम जो स्टार्ट कराई, जिसमें कि बेसिकली क्या जो सिस्टम यहाँ पे है वो ये है कि जितना गवर्नमेंट का पेंशन एक्सपेंडिचर है, वो बल्क ऑफ द 99% पेंशन एक्सपेंडिचर सिविल सर्विसेज के अ बंच ऑफ हैंडफुल ऑफ पीपल पे खर्च हो रहा है। तो हाँ, तो एक ये सवाल आया कि किस तरह से सारी पूरे देश की जनता को उसका बेनिफिट मिले। और उसमें सबसे पहला जो स्टेप था वो ये था कि सिविल सर्वेंट्स के लिए ही, ताकि वो एक पूरा डायरेक्ट टैक्स पेयर पे बर्डन नहीं आए, एक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम शुरू की जाए। और धीरे धीरे उस कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, उसको एनपीएस बोलते हैं, न्यू पेंशन सिस्टम, और धीरे धीरे उसमें बाकी लोगों को पार्टिसिपेट करना अलाउ किया जाए, जो कि अभी तक हो रहा है, जो कि अभी भी सरकार जो है वो उस स्कीम को एक्सपैंड कर रही है। तो एक ऐसी चीज को जो कि थोड़े से हाथों में एकदम रेस्ट्रिक्टेड थी, बहुत एक्सट्रीम इनइक्वालिटी थी कि सिविल सर्विसेज को तो मिल जाएगी लाइफ भर की पेंशन और सारा खर्चा सरकार अकाउंट पे जाएगा, और उसको कैसे, तो वो कदम एक लिया उन्होंने कि उसको कैसे फिर वो आगे सब तक, पूरी जनता तक पहुंचाया जाए। भूपेंद्र जी, मेरे से आपसे 2 सवाल है वैसे, लेकिन एक सवाल पहले ये है, COP26 में इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया, फॉर्चुनेटली ब्रिटेन को आलोक जी शर्मा ने रिप्रेजेंट किया। ये भी संयोग देखिए आपकी विधि का विधान कि जिन हुकूमतों ने हम पर शासन किया उन्हीं को हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें कई वायदे हुए। आपको लगता है कि उसमें गवर्नेंस में जो न सिर्फ इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ ज़बरदस्त होगा? आप कुछ ऐसा स्पेशल काम करेंगे कि जो आने वाली तारीख है, या हो सकता है अगले 5-10 साल बाद, गवर्नेंस पे यदि बीजेपी में कुछ बुक लिखी जाए तो वो चीज़ जरूर मेंशन हो, ऐसा कुछ काम? हाँ, बीजेपी का जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान में पॉलिसी को लेकर के बड़े विषय थे, चाहे आईबीसी जैसा कानून हो, चाहे जीएसटी को लागू करना हो, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के नए विषय को खड़ा करना हो, चाहे देश में नया इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का विषय हो, चाहे
बजट में बोल्ड स्टेप लेने का विषय है, वो निश्चित रूप से सरकार में याद किए जाएंगे। अभी जो हमारा देश में जो बजट आया है, जो वास्तव में ग्रीन बजट आया है, जिसमें ग्रीन बॉन्ड की बात की गई है, क्लाइमेट एक्शन की लेकर के बात की गई है, तो एक तरीके से COP26 में प्रधानमंत्री जी ने जिस पंचामृत और लाइफ के मंत्र की घोषणा करी, अब सरकार ने अपने विजन और एक्शन में भी उसको आगे बढ़ाया है, जो फ्यूचरिस्टिक समय में एक याद भी किया जाएगा कि हमने एक नए ग्रीन इनिशिएटिव की ओर अपने देश को बढ़ाया है, आत्मनिर्भर भारत बनाते हुए। थैंक यू। ये जो विषय है, शायद जो ऑडियंस हमें सुन रहे हैं या समझ पा रहे हैं, हो सकता है उनके लिए भी फ्यूचर में लिखने लायक एक नया टॉपिक मिल सकता है। उनके पास रेफरेंस हो सकता है कि अगले 10 सालों में भारत में क्या परिवर्तन होने वाला है और भारत दुनिया की जो अलग अलग जो शक्तियां हैं उनको कैसे लीड करेगा, ये भी एक उसका एग्जाम्पल है। ये हम लोगों का सौभाग्य है। कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई बेहतरीन कहने वाला या किस्से बताने वाला या अच्छी चीज़ें बताने वाला मिलता नहीं है, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं 2 ऐसे लोगों या 2 ऐसे शख्सियतों के बीच बैठा हूँ जिनके पास अनुभवों का एक बहुत बड़ा भंडार है, बातें और उनकी पीछे के किस्से शायद अनंत है। समय जो हमारे पास है वो बहुत लिमिटेड है। मैं इसे फॉर्मल नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैं सच में, मुझे खुद को ऐसा महसूस हो रहा है, हो सकता है जो दर्शक मुझे देख पा रहे हैं शायद उन्हें भी महसूस हुआ होगा कि इतनी बात होने के बाद भी हमें ऐसा लगता है कि शायद बातें अभी अधूरी है। यदि इन बातों को पूरा करना है तो जो इन्होंने किताब लिखी द राइज ऑफ बीजेपी, उसे अच्छे से पढ़िए, उसका फीडबैक दीजिए, उस पर ज़बरदस्त शायद रिव्यूज़ और कमेंट्स दीजिए। शायद देने से क्या होता है, लिखने वाले का हौसला बढ़ता है, उन्हें लगता है कि हमें और लिखना चाहिए। और मुझे पता है भारत में कई बार लिखने की परंपरा कम है और पढ़ने की परंपरा उससे भी कम है। शायद ये लिखने और पढ़ने की परंपरा और आगे बने, लोग उसको अच्छे से पढ़ें, ऐसी मेरी शुभकांक्षाएं हैं। आप और बेहतरीन काम करें और हम उससे कुछ सीखें, ये मेरी इच्छा है। आज का जो कार्यक्रम है उसके लिए मैं सभी मेरे जो दोनों विशिष्ट महानुभाव अतिथि हैं उनका धन्यवाद, और उनसे भविष्य में मिलेंगे ऐसी मेरी अपेक्षा है। थैंक यू। आज के शुभ रात्रि।